अस्सलाम वालेकुम। इस दफ़ा भी मैं आपको इंशाल्लाह 14 अगस्त पे इधर गिनी कोनाकरी में कैसे फेस्टिवल इंजॉय करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ बाकायदा कि कितना बड़ा प्रोग्राम गिनी कोनाकरी में इस दफ़ा पाकिस्तानी कम्युनिटी ने स्पेशली डॉक्टर साहब जो हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तानी कम्युनिटी उन्होंने इंतज़ाम किया है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। लो जी, अभी तकरीबन वेलकम पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे इन कोनाकरी तकरीबन डेकोरेशन की कंप्लीट हो गई। किधर गए जेडे कह रहे थे 12 बजे इतने होने ही क्यों सा मजा कोई भी नहीं आया सर, कोई भी नहीं आया। जो आया है पेंट आज़ादी से हवा भर रहे, आज़ादी से जितनी मर्जी भर। Commémore la naissance du pays dans la nuit du 14 au 15 août 1947 et sa libération de la domination britannique. C'est donc un jour de férié national marqué par des parades et des discours officiels. Parler donc de la souveraineté du Pakistan, c'est penser surtout au mouvement d'indépendance mené par Mohammed Ali Jinnah au 27e jour du Ramadan pour créer une patrie pour les musulmans. Alors la politique extérieure du Pakistan est guidée par la recherche de la sécurité nationale face à l'Inde, l'alliance stratégique avec la Chine, les relations complexes avec les États-Unis et bien sûr la solidarité avec le monde musulman. Alors mesdames et messieurs, d'entrée de jeu, je vous le disais, je suis maîtresse de cérémonie, mais à des voix plus autorisées que la mienne qui vous raconteront sans doute les autres types de relations que le Pakistan entretient avec d'autres pays et les éléments bien sûr à mettre à son actif. D'ici là, vous allez juste me permettre de vous décliner le programme du jour qui sera comme suit. À l'entame, nous allons bien sûr commencer par la lecture du Saint-Coran. Et s'en suivront les hymnes nationaux, d'abord de la Guinée et ensuite du Pakistan. Et nous aurons quelques minutes à passer à regarder ensemble un documentaire sur le Pakistan. S'en suivront bien entendu les discours officiels de monsieur l'ambassadeur du Rwanda en Guinée, du représentant de la communauté pakistanaise en Guinée. التين والزيتون وطور سينين. De rêves, de défis surmontés et d'un avenir qui continue de s'ouvrir. Car pour comprendre un pays, il ne suffit pas de regarder sa carte. Il faut écouter son histoire, découvrir son peuple, comprendre ses ambitions et regarder ce qu'il est capable de construire pour demain. Notre histoire commence il y a près de 8 décennies. Le 14 août 1947, le Pakistan est devenu une nation indépendante, au terme d'un mouvement historique porté par une aspiration profonde à la liberté et à la dignité. Mais derrière cette date se cachent des millions d'histoires personnelles.
Des familles ont quitté leur foyer, traversé des frontières et commencé une nouvelle vie avec peu de certitude, mais avec une immense confiance dans l'avenir. Au cœur de cette naissance se trouvait Muhammad Ali Jinnah, le Qaïd Azam. Pour lui, la création d'un pays n'était pas une fin, c'était le commencement d'une responsabilité. Bâtir une société fondée sur la dignité, la justice, la discipline et l'espoir. Depuis lors, le Pakistan a connu des épreuves, des transformations et de grands changements. Ses villes se sont développées, ses institutions ont grandi, et plusieurs générations ont consacré leur énergie à construire leur pays. Ainsi, lorsque le drapeau vert et blanc s'élève aujourd'hui, il ne représente pas seulement une indépendance. Il représente la mémoire de ceux qui ont sacrifié, le travail de ceux qui ont construit et le rêve de ceux qui regardent encore vers demain. Avec le temps, le Pakistan a compris une autre vérité. La force d'une nation ne réside pas seulement dans sa capacité à se défendre. Elle réside aussi dans sa capacité à contribuer à la paix. Dans un monde où les tensions peuvent rapidement dépasser les frontières, le dialogue devient une forme de courage. Le Pakistan a régulièrement défendu cette approche. Parler, écouter, rapprocher les positions et rechercher des solutions pacifiques. Cette tradition diplomatique s'est encore illustrée en 2026 lorsque le Pakistan a joué un rôle de facilitation dans les efforts de dialogue entre les États-Unis et l'Iran, en accueillant des discussions et en encourageant la désescalade. Mais la contribution du Pakistan à la paix mondiale ne se limite pas aux salles de négociation. Depuis des décennies, des militaires et des policiers pakistanais servent dans les opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Là où les populations ont besoin de stabilité, ces hommes et ces femmes servent sous le drapeau bleu. Leur mission est simple dans son principe, mais immense dans sa responsabilité. Contribuer à la paix, protéger les populations et aider les sociétés à retrouver leur stabilité. Mais surtout ne pas oublier le sacrifice, comme on vient de le voir dans la vidéo précédente, de ces gens qui se sont sacrifiés pour ce beau pays. Alors vous allez m'excuser, je vais un peu mélanger le français et l'anglais pour ceux qui ne parlent pas français. Alors cette journée est non seulement une fierté nationale, which is the friendship between you and myself, our two countries. So thank you for everything, thank you for inviting me. I don't have much to say. Bonjour tout le monde. Mesdames et messieurs, les membres du gouvernement qui étaient invités, qui sont représentés aujourd'hui par M. Tami, Excellences, Mesdames et Messieurs, les ambassadeurs et les missions diplomatiques accréditées en Guinée. Mesdames et Messieurs les représentants des institutions nationales et internationales, honorables invités, c'est un grand plaisir et honneur d'être parmi vous ce soir pour célébrer la fête nationale de la République islamique du Pakistan en Guinée. Il y a 79 ans, le 14 août 1947, naissant notre nation.
Cette date demeure gravée dans la mémoire collective pakistanaise comme l'acte fondateur de notre souveraineté. Elle consacre l'aboutissement du combat politique mené sous la conduite de son Excellence Mohamed Ali Jinnah pour qu'un peuple puisse enfin ordonner son chemin, son destin autour des principes simples et exige la dignité, la liberté, l'unité et la responsabilité. Chaque 14 août, notre nation entière s'habille aux couleurs du drapeau, se souvient et se réjouit. Je suis là Pakistan parce que beaucoup de Pakistanais ici me parlent et ne connaissent pas le français. Il faut que je parle français, elle va traduire français, il faut que tout le monde va comprendre. Merci beaucoup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Good evening and bonsoir. सबसे पहले मैं अपने तमाम मेहमान जितने भी एक्सीलेंस एम्बेसडर कौंसलर और गवर्नमेंट के जो हमारे मेहमान हैं, हम सब मिल के उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि ये लोग आज पाकिस्तान के लिए हमारे साथ हैं और आप सब मेज़बान हैं और ये हमारे मेज़बान हैं। इन सबको अपने दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। बिलखुसूस जितने भी मेहमान जो के एम्बेसियों से या गवर्नमेंट के उससे आए हैं, उन सबको मैं दिल से आपकी तरफ से भी और अपनी तरफ से भी इन सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, assalamu alaikum, good evening, bonsoir. Tout d'abord, je souhaite la bienvenue du fond du cœur à tous nos honorables invités. Je souhaite tout particulièrement la bienvenue à leurs excellences, aux membres distingués du corps diplomatique, aux conseillers, aux représentants du gouvernement, à mes chers amis, ainsi qu'à tous les frères et sœurs de la communauté pakistanaise vivant en Guinée. मैं एक दफ़ा फिर इन मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ दिल की गहराइयों से कि अपने कीमती वक्त से कुछ लम्हे निकाल कर हमारी इस खुशी में, जो कि हमारे पाकिस्तान की सबसे बड़ी खुशी है, उसमें मौजूदगी के लिए आए और हमें ये एजाज़ बख्शा कि ये लोग हमारे साथ इस खुशी में शामिल हैं। Je remercie du fond du cœur tous nos honorables invités qui ont pris une partie de leur précieux temps pour et partager la joie de ce cher Pakistan. Votre présence parmi nous est pour nous un grand honneur et une grande source de gloire. Aujourd'hui, je voudrais parler particulièrement de la communauté pakistanaise établie en Guinée. Nos frères pakistanais contribuent au développement du pays et participent à son progrès conformément à la vision du gouvernement guinéen. Ce sont des personnes qui, loin de leur chère patrie, le Pakistan, travaillent aux côtés du grand peuple guinéen et contribuent au développement et à la prospérité de ce pays. पाकिस्तानी कौम एक मेहनती, अमन पसंद और मेहनत करने वाली कौम है। आज हमारे पाकिस्तानी भाई गिनी के अपने भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। हमें खुशी है कि गिनी के लोगों के दिल बहुत बड़े हैं। यहाँ के लोग मेहनती, मोहब्बत करने वाले, मेहमान नवाज और दूसरों का एहतराम करते हैं। Le peuple pakistanais est un peuple travailleur, pacifique et profondément attaché à l'amour et à la fraternité. Aujourd'hui, nos frères pakistanais se tiennent côte à côte avec leurs frères guinéens. Nous sommes heureux de constater que le peuple guinéen a un grand cœur. Les Guinéens sont travailleurs, chaleureux, accueillants et respectueux des autres. यही वजह है कि बहुत से पाकिस्तानियों ने गिनी को सिर्फ काम करने की जगह नहीं समझा, बल्कि इसे अपना दूसरा घर बनाया। इन्होंने यहाँ अपने कारोबार कायम किए, रोजगार के मौके पैदा किए और यहाँ अपनी फैमिलीज भी बनाई। ये इस बात की खूबसूरत निशानी है कि गिनी के लोग पाकिस्तानियों से कितना प्यार करते हैं। C'est pourquoi de nombreux Pakistanais n'ont pas considéré la Guinée uniquement comme un lieu de travail, mais l'ont également considéré comme leur deuxième maison.
Ils y ont créé leurs entreprises, créé des opportunités d'emploi et certains y ont même fondé leur famille. C'est un magnifique témoignage de l'affection et de l'amour que le peuple guinéen porte aux Pakistanais. आज मैं इस स्टेज से अपने तमाम पाकिस्तानी भाइयों और बहनों को एक मशवरा देना चाहता हूँ कि आप जिन लोगों के साथ काम करते हैं इनके साथ हमेशा भाइयों जैसा सलूक करें, इनकी इज्जत करें, इनके साथ मोहब्बत और खुलूस से पेश आएँ और गिनी के कानून और रवायात का एहतराम करें, क्योंकि आप लोग यहाँ रिस्क कमाने आए हैं और यहाँ आपकी इज्जत पाकिस्तान की इज्जत है। Aujourd'hui, depuis cette tribune, je voudrais adresser un message important à tous mes frères et sœurs pakistanais. Traitez toujours les personnes avec lesquelles vous travaillez comme vos propres frères. Respectez-les et traitez-les avec amour et sincérité, tout en respectant les lois et les traditions de la Guinée. याद रखें कि आप सिर्फ अपने कारोबार, अपनी ज़ात की नुमाइंदगी नहीं करते, बल्कि आप पाकिस्तान के सफ़ीर हैं। आप ही पाकिस्तान का चेहरा हैं। पाकिस्तानी लोग भाईचारे, अमन और मोहब्बत को पसंद करते हैं। इसीलिए हमारा हर अमल पाकिस्तान और पाकिस्तान कौम की पहचान है। जो भी हम करेंगे वो पाकिस्तान के नाम से ही जाना जाएगा। N'oubliez pas que vous ne représentez pas seulement votre entreprise ou votre propre personne. Vous êtes également des ambassadeurs du Pakistan. Vous êtes le visage du Pakistan. Le peuple pakistanais croit profondément en la fraternité, à la paix et à l'amour. Ainsi, chacun de nos actes peut devenir une représentation de l'image du Pakistan et du peuple pakistanais. आज आइए हम सब मिलकर, जितने भी मेरे पाकिस्तानी बैठे, आइए हम मिलकर एक ऐद करें कि पाकिस्तान और गिनी के दरमियान तलकात में हम एक मजबूत पुल का किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान और गिनी का ताल्लुक मोहब्बत, दोस्ती और बामी एहतराम पर कायम है। हमारा रिश्ता बहुत पुराना है और कीमती है। आइए हम सब मिलकर इस रिश्ते को मजबूत करने का आजाद करते हैं। ये रिश्तों का पुल सिर्फ अल्फाज से नहीं, बल्कि हमारे अच्छे रवैये, हमारी मेहनत, हमारी मोहब्बत और हमारे किरदार से मजबूत होगा। क्या आप एक आवाज़ होकर मुझे बताएं कि क्या आप मेरे इस फैसले से आप एग्री हैं पाकिस्तानी? क्या आप ओके करते हैं? Aujourd'hui, engageons-nous tous ensemble à jouer le rôle d'un pont solide entre le Pakistan et la Guinée. Les relations entre nos deux pays reposent sur l'amitié, l'amour et le respect mutuel. Ce lien entre nos deux nations est ancien et précieux. Engageons-nous tous ensemble à le renforcer davantage. Ce pont entre nos peuples ne sera pas renforcé uniquement par parole, mais surtout notre travail, notre amour et notre engagement. मैं एक बार फिर आखिर में तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारी खुशी में शिरकत की और पाकिस्तान की यौम आज़ादी की इस खूबसूरत तकरीब में, जिसमें मुझे बड़े बड़े प्यारे प्यारे पाकिस्तानी नज़र आ रहे हैं और जो अपना काम, अपनी जॉब्स और ये छोड़ के यहाँ पे इस तकरीब में शामिल हुए और एक महफिल सजाई उस चीज़ की, एक खुशी मनाई उस चीज़ की कि जिसकी पूरी दुनिया में इस दिन पे मनाई जाती है। तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ और इन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस महफिल को आकर मज़ीद यादगार बनाया। अल्लाह पाकिस्तान और गिनी दोनों को अमन और खुशहाली अता फरमाए। आज मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ जितने पाकिस्तानी बैठे हैं कि ये एक मैंने एक बुनियाद बना दी आप लोगों के लिए। जो मैं कर सकता था, जितना मैं आपको लेके आज जा सकता था, मैं ले आया हूँ। मेरा कोई मकसद, कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि ना किसी सीट्स का, ना किसी चीज़ का। मेरा मकसद आप लोगों को पहचान बनानी थी यहाँ पे कि हम लोग पाकिस्तानी हैं। जहाँ पे भी जी आए आप कम अज़ कम आपका एक रिस्पेक्ट लेवल हो। जो मैं कर सकता था वो मैंने कर दिया। अब आप लोगों पे है कि आप इसको आगे कितना लेके जाते हैं। विवला गिनी, विवला पाकिस्तान। जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद। Une fois encore, je remercie du fond du cœur tous nos honorables invités d'avoir partagé notre joie et d'avoir rendu cette belle célébration
de la fête de l'indépendance du Pakistan encore plus mémorable par leur présence. Qu'Allah accorde au Pakistan et à la Guinée la paix, le développement et la prospérité. Vive le Pakistan, vive la République de Guinée, vive l'amitié entre le Pakistan et la Guinée. Je vous remercie. Voilà. Là, je ressors dans le corps de la traductrice pour retourner dans le corps de la modératrice. Merci donc au docteur Mohamed Tayeb pour son discours. Je précise en fait qu'il est le représentant de la communauté pakistanaise en Guinée. Il est à la fois vice-consul aussi, c'est ce qu'on n'a pas dit justement à l'entame de la coopération africaine et de l'intégration africaine des Guinéens établis à l'étranger. Merci. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Bonsoir chers tous. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatique, consulaires et représentants des organisations et institutions internationales accréditées de Guinée, Monsieur le consul général de la République du Pakistan de Guinée, Mesdames et Messieurs les ressortissants du Pakistan vivant à la République de Guinée, distingués invités, Mesdames et Messieurs, et mon cher frère Michel, l'ambassadeur du Rwanda à Guinée, c'est avec un réel plaisir, un grand honneur que je prends la parole au nom de son Excellence Dr. Mais surtout ne pas oublier le sacrifice, comme on vient de le voir dans la vidéo précédente, de ces gens qui se sont sacrifiés pour ce beau pays. Alors vous allez m'excuser, je vais un peu mélanger le français et l'anglais pour ceux qui ne parlent pas français. Alors cette journée est non seulement une fierté nationale, en face. Voilà. Et c'est le 69e anniversaire de la République islamique du Pakistan, célébré dans sa représentation diplomatique en Guinée, ce pays ami, ce pays frère au Pakistan. Voilà. Et c'est bon, on applaudit encore une fois, mesdames et messieurs, pour cette longévité.
en termes d'indépendance de ce pays d'Asie du Sud. Alors, le couteau est ici. Leurs Excellences, l'ambassadeur du Rwanda en Guinée, l'ambassadeur directeur général du protocole d'État, le consul général, le représentant de la communauté pakistanaise en Guinée. Ils sont tous ici présents pour couper ce gâteau. Tu vas nous servir plus tard de dessert. Merci à vous tous de vous être rejoints à cette belle célébration. Et c'est le moment, mesdames. वीडियो बन रही है वीडियो